यू आर इनसेंसिटिव, आपने रेशनलाइज कर लिया कि हम इसको नहीं लेंगे, आई एम गुड ऑन माय पार्ट, आई एम रैशनल ऑन माय पार्ट। सो अगर आप यू आर नॉट रिसेप्टिव, यू आर नॉट एट द रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूज, then is all so receiving, after receiving you choose to do, and after responding, after that valuing and organizing and then characterizing by values and influences and questions. These are the very steps of the cutting. ये सब क्या क्यों ये सब आप चाहते हैं अपने स्टूडेंट में जब वो पास करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई करना हम तो भीतर भीतर बहुत चाहते हैं, लेकिन चाहते क्या है हम बता नहीं पा रहे, ये सब बताया हुआ है। Behavior is very important. Attitude, ethics, posture, everything sums up into a behavior. Behavior क्या? The students are. These are the performance that we want at the end of the day. Conditions imposed by instructor. Conditions in order to improve the efficiency. Efficiency level में condition लगाते जाओ कि ठीक है कर तो रहे हो लेकिन इस कंडीशन में करो। These are all the parts of a competence. Simply this is the condition. Unpick the liver of a child. बच्चे का this is the condition. To the accuracy of 0.5 centimeter. So recognize 2 out of 4 major signs of liver by PV examination, not by ultrasound. Record weight of a newborn using liver scale up to the accuracy of plus minus 50 gram. These are the conditions. अगर केवल weigh करना नहीं, कितना accuracy चाहिए, ये condition है। किसका condition child है, female है, और एक morbid patient है. These are the conditions that we can impose to assess his efficiency of the competence. Degree, standard और criteria for judging the performance. हम degree और हम marks देते हैं 90%, grades होता है A grade, B grade, C grade. ये marks क्या है? This is the degree to which the competency has been achieved. So the standard or criteria for judging speed. अब जैसे अब questions हैं, the margin of error should be 10%. This is what I told you that our objective should be smart, it should be specific, measurable, achievable, realistic in a given time frame. MBBS करना है तो 4.5 साल के अंदर जिंदगी में नहीं करना, जिंदगी भर में. This is what it should be in a time frame. Focus means आप बात कर रहे हैं क्लास में, बात कर रहे हैं कहाँ सचिन तेंदुलकर, चांद तारे, रसिया यूक्रेन वार, IPL सब डिस्कस कर लिया और क्लास खत्म भी हो गई. बच्चे भी बहुत खुश, आप भी बहुत खुश. Have you achieved the objective of your lesson? No. So objectives you should know before कि आप इस अपने क्लास से चाहते क्या, आपका क्लास कैसे फ्रूटफुल होगा, या केवल टाइम पास करने आए और सैलरी उठाया चल दिए. No, we are not going to serve the nation like this. We have responsibility for our nation. So objectives should be concrete, detailed, focused, and with a well-defined outcome-based होना चाहिए. Outcome को भी हम measure करते हैं when we are devising our learning, assessing the assessment tools. तो objective पे ही सारा क्वेश्चन, आपका टीचिंग और आपका एग्जामिनेशन दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए. So what exactly are we going to do? Is it clear who is involved? Is the objective described with action verbs? Action verbs are to know, to recognize, to perform. These are सारे action verbs. Is it clear where this will happen? Is it clear to what degree it will be accomplished? Objectives can be measured. For this, ask questions such as how much, how many tasks, how will I know when it is accomplished? तुमने ये काम कर लिया
ये बात मैं कैसे जानूँ? एक तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वो काम तो कर लिया, पेशेंट से पूछो, अरे बोलो ऐसा किया कि हमको और दूसरा बीमारी हो गई, इतना दूर से दाब दिया जाए। सो ये फीडबैक होगा, अकम्प्लिशमेंट, आपने जो काम किया है उसमें आपको ऑब्जर्वर होगा। आप तो ठग लेंगे, आपने नहीं सर, अब आता है वाइवा में एग्जाम देने और ऐसे चढ़ जाता है अपने गलत जवाब पे, जैसे लगता है कि हमको अभी पीट देगा अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तो कहते ये नॉवेल है क्या, तुम लिख लिखोगे, कहानी लिखोगे? यहाँ पे ये मेडिकल कोर्स डेवलप हुआ है आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। कितने एक्सपेरिमेंट, कितने रिसर्च के बाद आते हैं मेडिकल कोर्स, उसको तो अपने इमेजिनेशन से बना दोगे यहाँ जवाब देने के लिए। So how will I know when it is accomplished and how to assess that change learning has occurred? ये आपका काम है कि how to assess that he has actually learned. So expectation is कोई हमारा महाभारत और रामायण का कहानी नहीं, ये हनुमान जी सागर तरफ के चले गए वहाँ। It should be realistic in our real life कि हम लोग कोई बहुत बड़े हीरो नहीं है, हम गलती हमसे भी होती है। ये काम किया जा सकता है और किस एक्यूरेसी से किया जा सकता है, इतना ही हम अब कमिट करें अपने पेशेंट को। जो हम नहीं कर सकते हैं वो बताएंगे तो रोज बात खाएंगे। So can we do with the resources that we have, and do we need to revisit our priorities? And this is devised according to phases. हर सेमेस्टर के हिसाब से competency objectives और आपका domains के हिसाब से अपने objectives, so that at the end he is a competent medical graduate, having learned from all these phases of practice, so that he is finally a smart IMG. So common mistakes while writing objectives. Common mistakes while writing objectives. क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बना, तो ये अपने गलतियों से आप सेंसिटिव हो जाइए, ये सब गलती नहीं करना। That describing what the instructor rather than learner is expected. लर्नर को क्या सीखना है ये बताना है, हमको क्या बताना है ये आपको नहीं बताना कि हम कैसे, ताकि हम बहुत अच्छे हो जाएं, ये नहीं, आप जिसको बता रहे हैं उसको अच्छा होना चाहिए। So it should be learner centered, including more than one behavior in a similar। एक ऑब्जेक्टिव में इतने सारा चीज बता दी, ये सब नहीं कर पाए। क्लियर रखिए, स्पेसिफिक रखिए और असेसमेंट मेथड भी स्पेसिफिक रखिए। एक ऑब्जेक्टिव में एक ही काम करें, एक काम को एक ऑब्जेक्टिव, छोटा छोटा, बहुत टाइम है। फॉरगेटिंग टू इंक्लूड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, उसमें एक ऑब्जेक्टिव को आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव का सारा जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसके हिसाब से यू चूज योर एक्शन ग्रुप्स यूजिंग वर्ब्स दैट आर डिफिकल्ट टू मेजर। ऐसे वर्ब्स मेजर मत कीजिए जिसको मेजरेबल नहीं है। Writing an unattainable, unrealistic objective and making an objective too general so that the outcome is not clear. तो तुमको अच्छा आदमी होना चाहिए, और ये क्या अच्छा आदमी होना चाहिए? एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा आदमी होना जरूरी है। क्या जरूरी है ये अच्छा आदमी? This is not clear what you want. So tips while writing: be realistic, take into account prior knowledge, available time, learning opportunities. Avoid too broad or too narrow. Avoid using the verbs know, understand, learn. Concise as possible. Manageable number. Use languages that students can understand. And alignment between learning outcomes. Because alignment नहीं होगा तो competency develop नहीं होगा। Low quality learning objective. देखिए, a student will be familiar with course of fiction. It can be improved by the end of lecture. First MBBS student must be able to describe the course of facial nerve correctly with the help of a diagram. This is what you want after first MBBS. Hypothesis आपने बना दिया, cigarette smoking causes cancer. कैसे? ये क्या? How many cigarettes for how many years for which age group? This is what your hypothesis is, and this is what you have to effectively prove the points in your hypothesis by research. So after the end of the course, the student must be able to correctly describe the content of this.
diagnosed as with that ratio of 0.5. These are the measurable with condition objectives of a competency. Management blood pressure competency. Objectives related to cognitive. At the end of the session, finally, the researcher will be able to enumerate 5 common causes of secondary heart disease. Enumerate 5 lifestyle changes to be advised. Enumerate 3 first-line drugs with their dose, and enumerate 2 side effects of each of them.